Good evening, everyone. It is my pleasure to welcome you all in LEAD MENT-OPINE Session. LEAD is an acronym for Leadership Enrichment for Adolescents through Assessment and Development. Our vision is nurturing new generation leaders, and our mission is fostering leadership amongst adolescents by providing opportunities to discover, develop, demonstrate their unique abilities for creating and sustaining ethical leadership in society. After 3 years of intense research by a team of psychologists, the LEAD framework was developed. This framework is based on the Positive Youth Development Framework of Richard Lerner. LEAD aims to develop leadership capabilities amongst adolescents through four dimensions of competence, collaboration, character, and confidence. Started in 2013, LEAD has already extended its programs to more than 30,000 students. Most of these programs are currently available in virtual variant also. These programs include the LEAD Camp, the LEAD Test 2.0, the LEAD Awards. LEAD Awards is the most awaited event organized every year since 2013 for students of 8th to 12th grade, where students from all over India from different schools compete on one platform. They go through six different stages that challenges them to develop various skills and give them real life exposure. And every year in LEAD Awards ceremony, we have different speakers as chief guests who share their leadership experience with the students. And this year, the LEAD Awards is completely virtual. You can visit our YouTube channel to see more for what LEAD Awards is and what are the action projects that students have taken this year. The few more programs that we currently have going on every week are Teenopine and Mentopine Session. Teenopine is a platform for students to discuss about various topics of topical interest. Participants share their ideas, opinions, and views. It plays a crucial role in developing their critical thinking, their communication, and their confidence. Mentopine that we are here today for is a series of webinars for the parents, teachers, and educators. The Mentopine sessions are held every week as well, and we have experts interacting with you all on certain unconventional themes and topics. The speaker for today's session is Mrs. Bhakti Dave. She is a hypnotherapist, life coach, counselor, and healer with more than 10 years of experience. She is the founder of Mind Soul Mentors, a platform that serves people from all walks of life facing unfathomable mental and emotional challenges. Their organization has healed over a great deal of minds going through unspeakable traumas through simple and doable techniques of neuroscience approach and amalgamation of various healing modalities. Welcome to LEAD Mentopine, ma'am. We are very glad to have you here with us today. And before I hand over to you, dear audience, there is a small note for you. We will be taking your question as well at the end of the session. So if you have any questions, you can drop the questions in the questions box or the chat box. We would be very glad. And ma'am will answer the questions at the end of the session, that is in the last 10 minutes. And ma'am, I'll now request you to take over the stage. Thank you, Shivani. Thank you so much for this wonderful opportunity to let me connect with so many people at the same time through this amazing platform. It's been a great honor because this field of counseling, neuroscience, and so many other different modalities is not something which is new to anyone. But yes, the healing process is always adding the novelty factor to it because healing is common to everyone. We all go through some or the other problems or traumas or situations in life where we need a shoulder to cry on or somebody to share it with, but the stigma attached to this is very high, and that is why it always becomes very difficult for people to come out and open up and speak about their problems, speak about the reason for the solutions they are looking for, and everything else attached to it. That is why we decided that let us go ahead and offer help unconditionally to people who are looking forward to do this. And basically the thing that happens, like I said, is it's not always easy to come out and speak, and so it is an initiative done by people like you and me who probably take this
onus on themselves that let us go out and let us tell them that we are here to help. हम लोग यहाँ है ही इसलिए कि आप सबका कहीं ना कहीं जहां भी जरूरत है, we can come out and tell you that we are here, so come to us, we are ready to help. And this is what LEAD is also doing, I presume, and this is what we are also doing as healers, coaches, and mentors. So I'm glad that I'm connected with all of you here. And today, the topic of NLP, which I'm a great promoter of, a science, a field of science, which is gaining a lot of importance since last so many years. We are here to talk about the importance of healing modalities through the way of NLP. Now, why NLP science is gaining so much popularity? First of all, let me introduce to you what NLP exactly is. Now, when we talk about NLP, it talks about a science which deals with a language that we talk with to our brains, to our hearts, to ourselves. जिस भाषा में हम अपने आप से बात करते हैं, जिस भाषा में हम अपने आप को कुछ कहते हैं, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, this whole package combined together has given rise to the science of neuro-linguistic programming called NLP. Neuro is something which is related to your brain, obviously. Language is something which you talk to your brain with. And programming is जो हमारे brain को बहुत सालों से मिली हुई है by default. 7 साल की उम्र से हम बहुत सारा फीडबैक लेते आ रहे हैं एज अ स्मॉल किड, लोगों से, अपने आसपास के वातावरण से, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द पीपल दैट वी डील विद, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर्स, एवरीबडी. तो ये लोग जो भी अपना ओपिनियन देते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, जो भी फीडबैक देते हैं, जो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये आपसे जब शेयर करते हैं, तब जाने अनजाने में उनके सारे ओपिनियंस आपके अपने बन जाते हैं. Like for example, if a small girl is being hit by a small boy in class 1, and if the boy has given her a nice thrashing with a scale when she was just some 6-7 years old, what conceptions she's going to have about that boy? She'll come and share it with few of her friends. वो आके अपनी 5-6 friends को आके बोल देगी कि boys are very bad, they always hit you with the scale, all boys are like that, all boys are like that. अब ये बन गया उसका प्रीसपोजिशन, ये बन गया उसका प्रोग्रामिंग. यही प्रोग्रामिंग के साथ वो बच्चा बड़ा होता है, द चाइल्ड ग्रोज अप एंड द चाइल्ड टेक्स दिस बिलीफ as long as she keeps moving ahead in her life. फिर वो स्कूल जाती है, आगे जाके बड़े स्टैंडर्ड्स में, कॉलेज में, हर जगह वो यही प्रोग्रामिंग के साथ चलती है कि बॉयज तो ऐसे ही होते हैं, दे ऑलवेज हैरेस द गर्ल्स, दे ऑलवेज इरिटेट द गर्ल्स. अभी ये उसका प्रोग्रामिंग उसका अपना नहीं है, उसको सिर्फ एक अनुभव हुआ और उस अनुभव से उसने ये धारणा बांध ली कि यही होता है और ऐसा ही होता है और हमेशा यही होगा. एंड दिस काइंड ऑफ प्रीसपोजिशन, दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ये उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है इस चीज को लेके कि यही होता है, बॉयज बिहेव दिस वे ओनली, सो आई डोंट लाइक देम और आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद बॉयज. ये उसके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बचपन से अभी तक अपने सबकॉन्शियस में फीड करते आए हैं और वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है. एंड देन वी डोंट इवन नो व्हाई वी आर लाइक दैट. वी आर नॉट अवेयर व्हाई द सबकॉन्शियस इज गिविंग अस सच मैसेजेस ऑल द टाइम, बिकॉज आपने कभी खुल के इसको एनालाइज ही नहीं किया होता है कि अगर मैं एक तरीके से पर्सनालिटी रख रही हूँ या मैं एक तरीके से बिहेव कर रही हूँ तो मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ. तो ये आपका जो प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन से लेके अभी तक, आपके जितने भी लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, जो चीज आपको बोली गई है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में जाके बैठ गई है और आपको ये पता भी नहीं है कि कब वो जाके आपका अपना ओपिनियन बन गया. आपका ये अनुभव भी नहीं हुआ होगा, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, बट जस्ट बिकॉज 4 लोगों ने आपको ये बता दिया कि ये ऐसे ही है तो आपने मान लिया कि ये ऐसे ही होगा. So it is not your born and brought up idea. It is an idea enforced on you by somebody else, and now it has become your program. You function according to that. So NLP deals with this. इसी सारे प्रोग्रामिंग्स को, आपके सबकॉन्शियस में ऐसे हजारों करोड़ों प्रोग्राम्स पड़े हैं बचपन से अभी तक, इसी प्रोग्रामिंग को अप्रूव करके, अच्छे प्रोग्रामिंग को, अच्छी लैंग्वेज जो आप ब्रेन से कहते हैं, जो अपने आप से कहते हैं, उसको आपके सबकॉन्शियस में बिठाना एनएलपी का काम है. This is where the neuro-linguistic programming comes into picture. The way you speak to yourself becomes your reality.
आप जो भी अपने आप से कहते हो वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है. And that is a proven fact. It is not some pseudoscience. Now the researchers have been, supported by all these facts and factualities where people have experimented, researchers have experimented this on people, and then they have got the results which says that this is the truth. किसी भी बात को 100 बार बोलने से, एक ही बात को चाहे वो कितनी भी गलत हो, उसको 100 बार बोलते रहो, वो सच हो जाती है, सच महसूस होने लगती है. अगर हो भी नहीं जाती तो वो सच महसूस होने लगती है. यू टेक जस्ट दैट particular talk in that particular way and you start making it or taking it in your belief system. आपके belief system का हिस्सा बन जाती है. And then that is probably the reason for all your sufferings, for all your talks, for all your behaviors and everything else that is done to you. जब हम न्यूरोलिंग्विस्टिक की बात करते हैं, उसे यहाँ समझने की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम ये बरसों पुरानी प्रोग्रामिंग को we try to uproot it and put a new and genuine, a very profitable, a very sustainable program into your subconscious code. सबकॉन्शियस के कोड में ये नई प्रोग्राम को बिठाने के लिए, इसको बार बार अलग अलग मोडालिटी से आपके अंदर इसको फिट करने के लिए, फिर बाद में जाकर आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए एनएलपी बहुत अच्छा काम कर रही है इस फील्ड में. अब कैसे? सो देयर आर वेरियस टूल्स. आज का जो टूल है वो है एंकरिंग. Now, anchoring is just one tool that NLP talks about. There are many other tools. Today we are having time constraint. हमारे पास एक ही घंटा है, तो एक घंटे के अंदर आपको सारी मोडालिटीज तो हम नहीं समझा सकते. तो हमने एक पर्टिकुलर मोडालिटी ली है, एक पर्टिकुलर टूल लिया है, which is about anchoring. Now, how does anchoring work? ये इस पर तो हम धीरे धीरे बाद में आएंगे. इसके पहले हम अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स समझ लेते हैं. If you have anything that you want to know or you want to, share, you can always put your comments or your queries in the chat box, and we can accordingly address it. But before that, just understand one small trait, one small, kind of personality bifurcation that we do in NLP. एनएलपी कहता है कि इंसान 3 कैटेगरीज से ज्यादा निकल कर आता है, 3 कैटेगरीज को ज्यादा बिलोंग करता है. 3 में से भी 2 के कॉम्बिनेशन हर एक इंसान में होते हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैटेगरीज इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. फर्स्ट वन इज विजुअल. कुछ लोग होते हैं जो विजुअली चीजों को ज्यादा समझ पाते हैं. दे अंडरस्टैंड व्हेन यू शो देम ड्राइंग्स, व्हेन यू शो देम पिक्चर्स, व्हेन यू शो देम स्लाइड्स और मूवीज और एनीथिंग. कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटरी होते हैं, उनको ऑडिटरी बोली हुई चीजों से ज्यादा प्रभावित होते हैं. वो उनको देखने से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप उनको वही चीज बोल दे या उनको समझा दे विथ योर वर्ड्स, विथ योर वर्बल कम्युनिकेशन, दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड योर आइडिया. दे इमीडिएटली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हो. दे आर वेरी गुड विद देयर ऑडिटरी स्किल्स. ठीक है. अब जो ऑडिटरी स्किल्स वाले होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वो विजुअल में बहुत वीक हैं, पर ऐसा भी होता है कि वो कॉम्बिनेशन स्किल को बिलोंग करते हो. जैसे विजुअल जो है वो ऑडिटरी भी हो सकता है, ऑडिटरी जो है वो विजुअल ऑडिटरी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. और द थर्ड स्किल दैट इज काइनेस्थेटिक. अब काइनेस्थेटिक कौन लोग होते हैं? जो बहुत टेक्टाइल होते हैं. उनको अगर आप कुछ बोल दो तो उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाओ तो भी दे विल नॉट बी एबल टू बी grasp the information and change themselves or understand something. उनको चाहिए कि आप उनको फिजिकली कांटेक्ट में लाके उनकी 5 सेंसेस को यूज करके कुछ बता दो तो उनको तुरंत समझ में आ जाती है बात. जैसे आप आप बोलते हो कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ. मैंने अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग में एक ड्रेस भेज दी व्हाट्सएप पे कि इस ड्रेस को देख लीजिए, डिड यू लाइक इट, और आप उसको देख के ऑर्डर प्लेस कर देते हो कि मुझे तो बहुत पसंद आई. तो ये आपने कर दिया बिकॉज आपको विजुअली वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी एंड यू वर हैप्पी टू बाय इट. वहीं आपकी एक फ्रेंड है जो बोलेगी कि मुझे इसको देखने से पता नहीं चलेगा, आई जस्ट वांट टू गो एंड सी फर्स्ट, मैं अपनी आंखों से देख के उसको फील करूंगी, देन आई विल डिसाइड. फिर वो जाती है शॉप में और शॉप में जाके उस ड्रेस को टच करके, उसको फील करके, फैब्रिक को देख के, उसकी कारीगरी को देख के या जो भी स्टिचिंग मोडालिटीज है उसको देख के शी विल सिलेक्ट द ड्रेस.
Now, here your friend is more of a kinesthetic person because she wanted to check the dress with all her five senses. उसको उसको टच करना था, फाइव नहीं तो एटलीस्ट थ्री. उसको टच करना था, उसको फील करना था, आंखों से देखने के बाद उसको समझना था कि अगर कारीगरी की है तो कैसी है, क्वालिटी कैसी है. ये इंसान और आप में इतना ही फर्क है कि आपने देख के उसको अट्रैक्ट होके बाय कर लिया. यू डिडंट बॉदर टू गो एंड टच इट, एंड दैट पर्सन वांटेड टू टच इट, वांटेड टू फील इट, एंड देन शी डिसाइडेड टू बाय इट. तो हम सब तीन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. हर इंसान दो का कॉम्बिनेशन होता ही है. एवरी पर्सन इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द स्किल्स. आइदर अ पर्सन इज विजुअल एंड ऑडिटरी बोथ, अ कॉम्बिनेशन. आइदर अ पर्सन इज विजुअल एंड kinesthetic both, a combination, or the other modality or the combination of both. तो हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि मैं किस चीज को ज्यादा रिलेट कर पाती हूँ. अगर मुझे कोई मूवी दिखा देता है तो मुझे चीजें समझ में आ जाती है, या अगर मुझे कोई मूवी की स्टोरी नरेट कर देता है तो आई एम ओके, मुझे फिर मूवी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने स्टोरी सुन ली, आई डोंट वांट टू सी नाउ. या फिर मुझे वहीं थिएटर में जाके पॉपकॉर्न हाथ में लेके पूरा मूवी का एक्सपीरियंस उसी एनवायरनमेंट में करूंगी तो ही, या करूंगा तो ही द मूवी इज गोइंग टू बी मेकिंग एनी सेंस टू मी. अदरवाइज कोई बोल भी दे या कोई मुझे पिक्स दिखा भी दे या ट्रेलर्स बता भी दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो देन यू आर काइनेस्थेटिक. एंड इन तीनों कैटेगरी में से आप किस कैटेगरी को ज्यादा बिलोंग करते हो या ज्यादा उससे रिलेट करते हो, दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. इसी चीज के ऊपर, इसको हम वैक बोलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक. वैक के ऊपर बेस्ड हर एक इंसान की अपनी एक पहचान होती है, और वैक का बेस लेकर ही एंकरिंग का टूल बना है, राइट, जो आज हम सीखने वाले हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, anchoring is something where we need you to do the activity, where we'll need you to do the entire process with us. तो आप आराम से रिलेट कर पाओगे कि वैक है क्या. इससे पहले लेट अस अंडरस्टैंड वैक के साथ एंकरिंग सीखना जरूरी क्यों है. Now आजकल की लाइफ में when we are all facing so many or the other, you know, different kind of problems and different kind of traumas in our life, हम कितनी सारी चीजों से गुजर रहे हैं एक साथ, you know, with so many things we are going on and on and on. एक के बाद एक, कभी कभी लगता है एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, दूसरी आ जाती है. पहली से तो बाहर निकलना ही पॉसिबल नहीं था, और another one is in front of me right now. I don't know how to deal with it. You must be seeing that suicide cases are increasing every day. Every day, day by day, there are a lot of things happening, and young people are getting into this suicidal traumas, and they want to go to such an extreme stage where they don't feel that the life is worth living. अभी जब ये सब होता है, इसका एक मेन रीजन होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. आपने कभी हैव यू सीन अ लायन चेजिंग अ डियर? अगर आपने चैनल पे, टीवी पे देखा होगा, किसी वाइल्ड लाइफ चैनल पे आपने देखा होगा, लायन इज चेजिंग अ डियर. जब लायन डियर के पीछे भाग रहा है उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए, डियर से जितना होता है वो भागता है दूर तक, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है. एक बार अगर वो बच गया तो वो झाड़ियों में जाके कहीं छुप जाता है और वो बच जाता है. लायन अपने रास्ते चला जाता है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू फाइट द डियर एनीमोर. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब डियर झाड़ियों में छुप के अपने आप को बचा रहा है, उसके बाद शेर के चले जाने के बाद आपको क्या लगता है डियर क्या करता है? व्हाट डज द डियर डू? Does it sit and cry in the fences, in between the bushes? Does it sit and cry, oh God, today the lion chased me and I was about to be killed? Today was the last day of my life, almost the last day of my life. I was just going to be killed. What do you think? वो उधर बैठ के पूरा दिन सल्क करेगा, पूरा दिन रोएगा, पूरा दिन ये सोचेगा कि मैं तो मरने ही वाला था, आज मैं कैसे बच गया, भगवान की तो बहुत बड़ी मेहरबानी है, दया है, आज मैं बच गया. पूरा दिन फिर उसी टेंशन में उसने निकाला कि पता नहीं कब वापस आया जाए और मुझे खा जाए. This doesn't happen with animals, it only happens with humans. किसी ने एक बार आपको कुछ बोल दिया तो वो चीज आपको इस तरीके से चिपक जाती है. किसी ने एक बार बुरा कुछ कर लिया बिहेवियर आपके साथ, तो वो चीज को लेके आप पूरी जिंदगी ऐसे चलते रहते हो एज इफ लाइफ वहीं थम गई है. सिचुएशन हैज स्टॉप्ड देयर, व्हिच इज नॉट ट्रू. किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ बिहेव कर लिया है जो आपको हर्ट कर गया है,
तो उससे बाहर निकल के तुरंत वापस अपनी रूटीन में आ जाना आजकल इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया है सबके लिए? व्हाई पीपल हैव बिकम सो ओवर सेंसिटिव? बिकॉज वी टेक एवरीथिंग टू पर्सनली। वो उनको लगता है ये सारा मेरे साथ हो रहा है क्योंकि सामने वाले ने मुझे मिसट्रीट किया है, इल ट्रीट किया है, ये मेरे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं टॉलरेट करते जा रही हूँ या मैं सुनते जा रही हूँ, तो सब मुझसे ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। एंड देन द पर्सन स्टार्ट्स हैविंग दैट प्रोग्रामिंग इन द सबकॉन्शियस that everybody treats me bad, everybody treats me in a wrong way, everybody misuses me, they don't understand me, they never understand what I try to say, especially when it comes to family members or friends or aajkal to boyfriend girlfriend love relationships everywhere. This is happening so much on a larger scale with everybody. फैमिली लाइफ में भी हो, जैसे इवन पेरेंट्स के साथ बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जो भी आप रिलेशन ले लो, हर जगह बहुत कम उसका ड्यूरेशन पॉजिटिविटी का रहता है और बाद का सारा पीरियड तकलीफ और दिक्कतों में ही निकल जाता है। एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट में उसको मैनेज करने में ही चला जाता है। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ योर सफरिंग, उसने कुछ बोल दिया, उसका पीरियड आपने प्रोलॉन्ग कर दिया, बोला है इतनी दफा या इतना टाइम में, और आपने उसको खींचा है पूरे दिन, महीने, साल, पता नहीं कितने इयर्स, एंड देन फाइनली इट इज सो मच स्ट्रेच दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। फिर आप उसी पर्सनालिटी को बिलोंग करने लगते हो, वो आपका हिस्सा बन जाती है, वो प्रोग्रामिंग। जब किसने कुछ बोल दिया था, आपको बहुत इमोशनल रिएक्शन आपने दे दिया था, over emotional reaction to any situation becomes a memory. Memory बुरी बनती ही इसी तरीके से है। How do we store the memory? How do the bad memory become the part of our personality? Because you give it a good amount of emotional reaction. The bigger the emotional reaction, the worse the storage of memory it occupies. आपके दिमाग में वो मेमोरी ज्यादा से ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी सालों तक, और आपको ट्रिगर करने में किसी को देर नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, सालों पहले अगर आपको किसने बोल दिया कि यू आर अ वेरी क्लमजी मैनेजर और आपको कुछ मैनेजमेंट स्किल नहीं है आपके अंदर, ये बात आपको इतनी बुरी लग गई क्योंकि वो उस इंसान ने बोला जिससे आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये आपको ऐसा कुछ बोलेगा, और उसने आपको ये बोल दिया। अब आप इसको लेके पूरी जिंदगी चल रहे हो, फिर आप जिस भी जगह जाते हो, अगर कोई मैनेजमेंट की बात करता है तो आपको ये इंसान याद आ जाता है, वो सिचुएशन याद आ जाती है। मुझे तो ऐसी कमेंट दी थी उसने, आई स्टिल रिमेम्बर द वे दैट पर्सन हैड टोल्ड मी दिस अबाउट माई सेल्फ, एंड यू गेट इन टू दैट जोन, पूरा वो थॉट में चले जाते हो। शायद कभी कभी ऐसा होता है, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था, traumas are bigger than this, where people have cheated on people, where they have been physically, mentally, emotionally abused for years on end. Yeah, they keep abusing to people for years on end. तो आप सोचिए ट्रॉमा भी कितने लंबे रहे होंगे, प्रॉब्लम्स भी कितने सालों तक रही होगी, उसके बाद उससे निकलना तो और भी डिफिकल्ट है क्योंकि उस टाइम पे आपने रिएक्शन बहुत ज्यादा दे दिए हैं। यू हैव गिवन लॉट ऑफ इमोशनल इन्वेस्टमेंट इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। किसने कुछ कहा है, आपने 4 5 6 दिन या महीने तक उस बात को लेके उस इंसान के साथ बहुत सारा रिएक्शन दिया है, बहुत सारे झगड़े किए हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स डील की है, और फिर बाद में जब आपको उसमें से निकलना है तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर it becomes very difficult to come out of it. Why? Because you give lot of emotional attention to it and now that has become your memory. अब वो एक याद स्टोरेज बन के आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। फिर कुछ भी बात उसके रिलेशन में हो तो यू गो बैक टू दैट फीलिंग, दैट मेमोरी, एंड अगेन योर मूड गोज हेवायर। आपका सारा मूड उस टाइम पे उस बात पे चला जाता है, उस मेमोरी पे चला जाता है, एंड देन यू ड्रेन योरसेल्फ, देन यू फील एज इफ यू आर डन, लाइक अब आपसे कुछ नहीं होगा, आपका मूड खराब हो गया, आप वापस कुछ नेगेटिव जोन में चले गए। So this is what happens when the memory is triggered and when it is stored for a longer period of time. And that is where anchoring comes into picture, which helps you to delete the stored memory with time. Gradually anchoring की practice बार बार करने से वो memory delete भी हो जाती है. And in its place, it helps you to sustain with a positive memory, which has been extremely useful for your betterment and growth. जब आप नेगेटिव मूड में चले जाते हो, नेगेटिव जोन में चले जाते हो, तो बाकी किसी चीज के साथ कनेक्ट होने का आपको कोई सेंस नहीं लगता है।
You feel that अभी भी जो आप कर रहे हो वो भी useless है. It is not making any point because उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था. So now I'm not able to get into any kind of positive zone. मेरा पूरा मूड चला गया. मुझे वो एक बात याद है कि अब now I'm not in that state of mind to sit and think something productive. So I'm not in a mood to do anything. Ultimately, what happens? Your productivity is affected. You are at loss. आप उसी मेमोरी को बार बार लेके अगर चलोगे तो वो बीमारी में मैनिफेस्ट हो जाती है शरीर के अंदर. ये इसके भी बहुत सारे रिसर्चेस ऑलरेडी हुए हैं. इसमें भी बहुत सारा कुछ ऑलरेडी हुआ है. बहुत सारा काम इसके ऊपर हुआ है. आप चाहो तो रिसर्च पेपर्स निकाल के इसको गूगल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे. आप प्रिंट आउट्स निकाल के भी देख लो, पढ़ो उसको बैठ के ध्यान से. कितना सारा इसके ऊपर काम हुआ है. दैट दिस ओल्ड मेमोरीज व्हिच आर ट्रॉमास, इफ दे स्टे विथ यू एज अ मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे मैनिफेस्ट इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिजीजेस. कैंसर इज वन सच एग्जाम्पल. कैंसर इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस. लोगों को आजकल इतने कैंसर के केसेस पहले तो नहीं थे, अब इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं? Because it is a form of disease which is manifested because of resistance in your body. आप किसी चीज को लेकर बहुत रेजिस्टेंस फील करो तो उसी के रीजन से ब्लड में क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, गांठें बननी शुरू हो जाती है, और वही गांठें आगे चल के फिर it is in the multiplies in the form of cancer and then comes out in the form of cancer. This is one example that I gave you. Many diseases are manifested because of this wrong memory technique or wrong memory habit, a bad memory remembrance which is lying in your subconscious. आपको लगता है मैं तो अभी ज्यादा इसको याद नहीं करती, पर मुझे पता है जब याद आती है वो बात तो मुझे बहुत हर्ट होता है. तो दैट मीन्स इट इज देयर, इट इज डूइंग इट्स वर्क. वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ के बहुत कुछ कर रही है ऑलरेडी. आपकी बॉडी को खोखला कर रही है अंदर से. उसमें बीमारियों का घर बनाने की तैयारी कर रही है. अब इन सब से, ये सारे ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए ही NLP has found out so many tools, and one of them is like anchoring. How you can come out of a bad memory instantly within no time and get yourself into a very happening or very rocking mood. So I hope you all are ready because I can't see any question over here. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो भी बोल रही हूँ पता नहीं आप लोग उसके साथ रिलेट कर भी पा रहे हो या नहीं. So if there is something which you want to say, which you want to ask, then I'll be able to go ahead with the tool and technique which I can teach you. Thank you, Sarika. At least somebody has given a connection, given a white signal that yeah, it is something which you can relate with. So when there are a few people over here, I would just you know ex- yeah, I would just expect that you put your views here so that मुझे लगे कि I'm not talking to a wall because मैं तो आपको देख नहीं पा रही हूँ पर मैं relate बहुत ज़्यादा कर पा रही हूँ. Because I have seen so many people going through this. Being a healer, being a counselor, ये tool को मैंने बहुत यूज किया है और इसका बहुत फायदा लोगों को हुआ है. तो वाई नॉट, हमने यही सोचा था कि क्यों ना इसको एक टूल को भी अगर हम लोगों तक पहुंचा दे और इसको रोज इनको बोले कि इसकी प्रैक्टिस करो भाई बैठ के 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट आपके पास जितना भी टाइम है बैठ के उसको प्रैक्टिस करो तो शायद आप you after few days, few months, you will be able to come out of any wrong memory, any wrong situation that you feel that you are stuck with. Lena, of course, I know you have been there. Yeah. It's so nice to see you here. When my known people are here, I feel really, great that then they know that what I've been teaching. So let's just try and understand what anchoring actually can do to yourself. जब एंकरिंग सीख जाते हो आप उसके बाद होता क्या है कि इसकी कंस्टेंट प्रैक्टिस से आप किसी भी बुरी सिचुएशन में बुरे मेमोरी में या बुरी एनवायरनमेंट में भी फंसे हो बट इस एक टूल को सीखने के बाद you feel as if you do not need any outside help. You are able to do it on your own. आपको किसी शोल्डर या किसी कंधे पे जाके रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी. You will be able to sustain yourself. You will be able to come out of your problems on your own. Yes, Elizabeth, I'm definitely going to share this, and I'm coming towards that as well. Another one coming in the suffering in this current memories. Yes. So Yeah, what Bhakti, happens? Yes. someone sent me in message and Okay. he is not able to in chat box. So on behalf, I'm just asking a one question like Okay. if go through certain issues or suffering certain things like right now because of this pandemic a lot of people are losing their jobs and
there are a lot many issues are getting hurt during this pandemic time, like throughout 24/7 they stay home. So there are certain things Right. which hurts them a lot. They can never speak in front of their family members Hmm. because they don't hurt someone else, right? So at that time, Right. how they can overcome from this by using this tool of NLP. Yes. So, according to me, like I said, I mentioned before also, we have lot many techniques. पर आज की जो टेक्निक है एंकरिंग, वो उसी के लिए मैं इतना पुश कर रही हूँ सबको कि आप इसको सीख लो आज. वही मैं आगे सिखाने वाली हूँ. इसको एक बार आप कर लो एंड आप 5 दिन 6 दिन जितना जब टाइम मिले इसको बैठ के करो. इट डजंट रिक्वायर मच टाइम ऑल्सो. इट इज हार्डली 5 मिनट्स का काम. एंड इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस बार बार अगर करते रहोगे तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंकरिंग टूल. और फिर आप जितना भी मुझे आप क्वेरीज आप भेज रहे हो या जितना भी यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू, यू ऑल विल बी एबल टू हील योर सेल्फ थ्रू दिस वन टेक्निक एट लीस्ट. Because I'm not your counselor, because you are not my client, so I cannot go on with you. जब हम clients के साथ डील करते हैं, हम ये चीज उनको होमवर्क के तरीके पे रोज करवाते हैं, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार. बट जब आप मेरे साथ नहीं हो तो आप ये सीख के अपने आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो. ये उसमें भी बहुत इफेक्टिव होगी. Yeah, there are so many people who have written something or the other in the box, but I'll definitely come back to your questions. Physical pain, Medha Sant. If you want to talk about physical pain, yes, all physical pain manifests from the psychological problems only. यहाँ पे सब ठीक है तो बॉडी में अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा. If you want, you can Google certain things. उसमें लिखा है कि सारे के सारे physical pain, लुइसी है, I'll prefer. जिनको पता है उनका तो बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है, आप लुइसी हे का बुक हील योर सेल्फ हील माई लाइफ पढ़ लीजिए. उसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है, जैसे मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया, शी इज क्लियरली मेंशन दैट कैसे हर एक बीमारी सिर्फ यहीं से शुरू होती है. पहले हमारे एंसेस्टर्स कहते थे सारी बीमारियों का जड़ आपका पेट है, बिकॉज आप जो खाते हो उसी हिसाब से होती है. ये तो एक सही बात है ही, बट इसके उपरांत सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरी बिहेवियर, एवरी डिजीज, एवरी प्रॉब्लम हियर एंड दैट इट मैनिफेस्ट इन द बॉडी. पहले वो दिमाग से शुरू होती है, फिर शरीर में दिखाई देने लगती है रोग के रूप में. तो यहाँ अगर सब कुछ ठीक कर लोगे तो अपने आप फिजिकल पेन में, प्रॉब्लम्स में फर्क पड़ना ही है. इट इज गोइंग टू शो इनटू योर फिजिकल बॉडी ऑल्सो. Yes, even fibrosis, yeah, even fibrosis, even tumors. Like I said, even cancers are healed. Once they have healed themselves emotionally, cancers are also healed. And this is not some pseudoscience I'm talking about. This is something very much proven and very much research based techniques and theories. So the clients which are with me, I send them my researches. जो मुझे researches मिलती है मेरी studies से, मैं उनको भी वो भेजती हूँ कि इसको पढ़ो. Renowned scientist ने इसको किया है, तो ये कोई ऐसे वैसे कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, ये साइंटिस्ट की रिसर्च है. अब इसको बिलीव करो कि सारी चीजें यहाँ पे हील होने के बाद शरीर में अपने आप हीलिंग शुरू हो जाती है. राइट. तो एक ये हीलिंग की वजह से ही एंकरिंग को इतना इंपॉर्टेंस दिया है हम लोगों ने. बहुत सारे, लाइक आई सेड, बहुत सारे टूल्स है, बट लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस वन. सो आई वांट यू ऑल टू बी रेडी, बिकॉज इसको करने में भी हमें 10-1 मिनट लगेगी. So after that, you might come up with few more questions. So let us give ourselves some time. For 10 minutes, just put yourself in the shoe of your own self that was in the past. हम पास्ट में जाएंगे, लेकिन पास्ट की उस मेमोरी में जाएंगे जो बहुत ब्यूटीफुल है. राइट. इसको करना है 5-10 मिनट के लिए. और कैसे करना है, मैं खाली बोलूंगी, आपको खाली सुनना है. और सुनने से पहले जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, विथ योर लेग्स फोल्डेड, क्लोज योर आईज and breathe very slowly. Let us try this. Let us do this all. थोड़ी देर के लिए आप वहां चले जाइए जहां मैं आपको भेज रही हूँ. अपने आप को पूरा ट्रस्ट, पूरा मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. And then surrender yourself. Sit with your legs folded, your eyes closed for 5 minutes. And now breathe slowly. धीरे से सांस लीजिए. बहुत धीरे से सांस लीजिए. Inhale and exhale very slowly. Now, think of an amazingly beautiful memory that you had in the past. Any beautiful memory. It may be your graduation day, it may be your wedding day, maybe a day when you were given some kind of award, reward,
when there was a childbirth in your house or family, any day which reminds you of the best time of your life, a picnic, a vacation that you had been to, कोई भी दिन ले लीजिए, उस दिन को याद कीजिए। ये करते वक्त अपने हाथों की 2 उँगलियों को एक साथ दबा दीजिए, कोई भी 2 उँगली ले लीजिए, एक साथ उसको दबा दीजिए, दोनों हाथों में। ये करते-करते वो 2 उँगलियों को एक साथ दबा दीजिए और वापस उस दिन को याद कीजिए जो आपके लिए एक बहुत सुंदर और मेमोरेबल डे था। अमेजिंग डे, यू हैड अ वंडरफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। आपने इतना एन्जॉय किया था, इतनी खुशी आपको महसूस हुई थी कि उस खुशी के सामने और कोई चीज़ उस टाइम पर इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। उस खुशी के साथ आपने बहुत सारा वक़्त बिताया था। यू वर हैप्पी फॉर डेज़ ऑन एंड बिकॉज़ ऑफ दैट हैप्पी मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे आप। ब्रीथ स्लोली। याद आया वो दिन? अब आँखों को बंद ही रखना है। ओपन योर आईज़ ओनली व्हेन आई टेल यू टू डू इट। अब उस दिन आपने क्या पहना था? ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू वर वेयरिंग? Think about it, what you were wearing, your favorite dress, a particular cloth, a particular color. पूरा ड्रेस भी अगर नहीं याद आ रहा तो कलर याद कर लीजिए, क्या पहना था। Now think about the people around you. कौन था आपके आसपास जब ये सब हो रहा था? फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, कोई एक स्पेशल इंसान, कुछ एक स्पेशल लोग? कितने लोग थे? आपके टाइम उस टाइम आपके आसपास कितने लोग थे? अप्रॉक्सिमेटली 3, 4, 10, 20, 15, 100, 1? याद आया कितने लोग थे? और उन सबके चेहरे, रिमेंबर द फेसेस, उस फेसेस के एक्सप्रेशंस, what were their expressions? Were they smiling or were they shocked? Were they surprised? What was the expression of the people around you? अगर एक भी इंसान था तो उसके चेहरे पर क्या भाव थे उस वक्त? And now वो क्या कह रहे थे, उनकी आवाजें कुछ याद आ रहा है? वो क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? कुछ इतना अच्छा जिसको सुनकर आप हंस रहे थे, जिसे सुनकर शायद आप और खुश हो रहे थे। ऑलरेडी इट वाज एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल मोमेंट। और इन सब की बातें, इन सब के चेहरे की हैप्पीनेस, ये सब देखकर आप और भी खुश हो रहे थे। द मोमेंट्स वर अमेजिंग, ब्यूटीफुल। प्रोबेबली इतना खुश और इतना हैप्पी आपने शायद अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत कम महसूस किया है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि आप इतने खुश थे, इतनी अच्छी फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ आप जी रहे थे। नाउ थिंक अबाउट द वॉइसेस इन योर ईयर्स एंड द वर्ड्स दैट दे वाज टॉकिंग। उनके शब्दों को याद कीजिए, वो क्या बोल रहे थे, आपसे क्या कह रहे थे उस वक्त। कोई भी ऐसा शब्द आपको याद आ जाए या बात आपको याद आ जाए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी हाथों की उंगलियां अभी भी उस मुद्रा में है। याद कीजिए उस मोमेंट जब वो आपसे कुछ अच्छा कह रहे थे और आप खुश हो रहे थे उसे सुन के। यू वर सो हैप्पी दैट यू वर ऑलमोस्ट लाफिंग एंड स्माइलिंग एंड योर फेस वाज लिट अप विथ स्माइल। यू वर वेरी हैप्पी। They were also laughing and you were also smiling and everything was so cheerful. Wonderful. The feeling was amazing. Now increase the volume. वो जो भी बोल रहे थे उसकी आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा,
उसका वॉल्यूम तेज कर दीजिए, थोड़ा जोर से सुनने की कोशिश कीजिए, आपके कान के थोड़े नजदीक उनकी आवाजों को महसूस कीजिए, जैसे वो अभी आपसे कह रहे हो। उनके चेहरों को नजर के थोड़ा नजदीक लाने की कोशिश कीजिए, पहले से थोड़ा नजदीक। ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज। पहले जितनी थी उससे थोड़ा और पास, करीब से उन चेहरों को देखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी का भी हो, आपकी फेवरेट व्यक्ति, आपका कोई अपना, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने वो मोमेंट शेयर की थी, उसके चेहरे को आंखों के थोड़ा और नजदीक लाने की कोशिश कीजिए, जैसे वो एकदम आपके सामने खड़े हैं। आपकी हाथों की उंगलियों की मुद्रा अभी भी वैसी है, उसको फील करते रहिए। अब उन्होंने जो पहना था, जो आपके साथ लोग थे, उन्होंने जो पहना था, जो उनको उस वक्त रंगों से जो वो लदे हुए थे, जैसे कलर्स उनके शरीर पर थे, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। आसपास के चेहरों को, उसके एक्सप्रेशंस को याद करने की कोशिश कीजिए, जो कपड़े थे उसको याद करने की कोशिश कीजिए। यस, you remember what they were wearing, you remember how they were smiling. It is very clear to you now. Gradually the picture is becoming very clear. How was that feeling when it was always and all around the smiling faces, as in far when you can see your, as in far your eyes could reach? कैसी थी वो इमोशन? आप इस वक्त दिल में उसको फिर से महसूस कीजिए। लिव द सेम मोमेंट अगेन राइट नाउ, जैसे ये अभी हो रहा है, ये सब अभी आपके सामने है। फील इट राइट नाउ। वही खुशी आपके चेहरे पर अभी भी होनी चाहिए, वही हंसी, वही स्माइल, वही इमोशन, एवरीथिंग इज सेम राइट नाउ। दोस पीपल, उनकी आवाजें, उनकी बातें, उनकी हरकतें, उनका आपके साथ प्यार से बात करना या आपकी तारीफ करना, आपको बहुत सारा अटेंशन और प्रेम देना, यही सब आपको दिख रहा है इस वक्त। जैसे आप ये देख रहे हैं, आपको वही खुशी फिर से महसूस हो रही है, उसी पल में फिर से चले गए हैं। And your fingers are still in that mudra. You can feel the energy in your fingers too right now as you think about this memory. Now, you are so happy that you don't feel like coming back. It is such a beautiful and wonderful memory. Oh God, everybody's so happy. And you are in the seventh heaven on cloud nine. You are so, so, so cheerful. What a wonderful day it was. What a wonderful moment. Beautiful memory and beautiful moment. You'll carry this moment in your heart for the rest of your lives. And it is really, really worth cherishing. आप कहीं भी जाएं, इस याद को अपने साथ हमेशा लेकर जाएंगे. Gradually come back to the present moment and open your eyes. धीरे से वापस आइए. Breathe slowly and open your eyes. Rub both your hands and put it on your eyes. On your eyes. When you do this, you are back, transported into the present moment. Now, आपको आपकी मुद्रा याद है? आपने क्या बनाई थी when you were sitting? मैंने ये बनाई थी. आप कोई भी मुद्रा बना सकते हो, ये जो भी आपको ठीक लगे.
One of my client doesn't make a mudra. What she does is she holds her hair. वो अपने बाल पकड़ती है. उसको ये पसंद है तो वो बाल पकड़ती है. I said okay fine. Mudra is anything that is attached, that makes you feel attached to your body. It can be anything. आज मैंने आपको ये सिखाया है. आप कुछ भी कर लो. आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, कुछ भी कर लो. ये करने का एंकरिंग का ये टूल जो हमने अभी सीखा, कैन यू पुट योर एक्सपीरियंसेस इन द चैट बॉक्स? हाउ डिड यू फील जब आपने ये किया? Okay, I'll wait for a few more comments. Relaxing, okay. जानवी, रिलैक्सिंग तो था ही, बट रिलैक्सिंग के साथ you could go back. True, Lina, I totally agree. Elizabeth, that's great. If you could remember most of the details, little bit colors here and there is okay. If you don't remember that much, that's okay. Anushka Jha, you felt it was amazing. Great. So, exactly, Anubha, exactly. I didn't want to come back. It was a difficult transition. Yes. Anchoring का यही सबसे बड़ा powerful point है कि एक बार आप anchoring कर लो तो आप पीछे से वापस आना ही नहीं चाहते. वो memory इतनी strong है. अब हमने जो ये किया था, मेधा, दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू. ये मोमेंट वापस क्यों नहीं आ सकती? ये जरूर आ सकती है. यही हम कर रहे हैं. हमने जो ये मुद्रा बनाई थी, आज के बाद जब आप एंकरिंग की प्रैक्टिस करने बैठोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इसमें मास्टरी होती जा रही है. इसको इस तरीके से पकड़ के, या ये मुद्रा जो आपने जो भी बनाई थी, ये मेरी मुद्रा है, आपने जो भी बनाई थी, इसको इस तरीके से पकड़ के आप जब भी किसी भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में, किसी भी खराब मेमोरी के टाइम पे, किसी भी बुरी आपको कोई ऐसी चीज याद आ जाए जो आपको मूड खराब कर रही है, जो आपको अच्छा स्टेट में ले जाने के बदले आपको कहीं डाउनफॉल में ले जा रही है, आपको क्या करना है? सिर्फ इसको इस तरह पकड़ लेना है. आप 1000 लोगों को बीच में भी हो तो आपको इस उंगलियों को इस तरह, उस मुद्रा को इस तरह पकड़ लेना है. जब आप इसको इस तरह पकड़ लोगे, बार बार प्रैक्टिस के साथ क्या होगा, ये मुद्रा आपको उस मोमेंट में लेके जाएगी. आपको बैठ के सोचना भी नहीं पड़ेगा. ये मुद्रा के साथ वो इमोशन अटैच हो गया है. अब मुद्रा इज इक्वल टू द हैप्पी इमोशन. मुद्रा प्लस हैप्पी इमोशन. दिस इज द अमेलगमेशन, दिस इज द टोटलिंग ऑफ दो सिचुएशन वेयर दोनों चीजों को मिलाकर वो इमोशन आपको उस मोमेंट में लेके जाएगा जब आप सच में बहुत खुश थे. And you will come out of the problems which are there in the present. और इससे बेटर आप उसको अच्छे से डील करना सीख जाओगे. इससे ये नहीं होगा कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन आप उसको डील करना सीख जाओगे. आपको लगेगा नहीं, अब मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हूं कि कोई भी बैटल है सामने, मैं फाइट कर सकता हूं या मैं फाइट कर सकती हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी देखा हुआ है. आई हैव some beautiful memories attached to myself, and now when I come back in the present moment, I'm in a position to give a good fight. I'm in a position to face it heads on. राइट? तो ये एक सिंपल टूल है, बहुत इजी टूल है. इसका तो मतलब इतना सारा हम लोगों ने इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे हैं, दैट क्लाइंट्स हैव हील्ड देमसेल्व्स ओनली बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर एंकरिंग टेक्निक. दूसरी मोडालिटीज तो हम करते ही हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव. और इसको इतना मैं प्रमोट इसलिए करती हूँ हर बार मेरे फ्री सेशंस में भी. देयर आर पीपल हु आर हियर, फ्यू ऑफ देम आर हियर, सो इवन दे हैव एक्सपीरियंस दिस. जिनको मैंने फ्री सेशंस दिए हैं उनको भी हम लोगों ने बार बार ये चीजें सिखाई है. Yes, Lena, it reminds you that life has given you the most wonderful moment in the past and you're capable of repeating it in the future and feel hopeful about things and uplifts your mood instantly. That is why anchoring helps a lot. उसी में एंकरिंग की हेल्प बहुत ज्यादा लगती है. ये बहुत ज्यादा आपको बुरी मेमोरी में से निकाल कर पॉजिटिव मेमोरी में लेकर आता है, बुरे मूड से निकाल कर अच्छे मूड में लेकर आता है. एंड दैट इज हाउ यू कैन कीप गोइंग इन योर लाइफ. दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, वेरी डुएबल, वेरी इजी. It's not some rocket science, right? Yeah. So anybody can do this. Anybody can learn this. इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है. दिन में 3 बार, 4 बार, 10 बार. जब फ्री बैठे हो, नेटफ्लिक्स देखते रहते हो, फालतू में बिंज वॉचिंग करते रहते हो, उससे तो बेटर है ना ये सीखो, इसका प्रैक्टिस करो. ये बहुत काम आएगा लाइफ में. नेटफ्लिक्स पे देखी हुई कोई भी सीरीज, कोई भी कंस्टेंटली वेस्ट किया हुआ टाइम इतना प्रोडक्शन नहीं है, इतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना ये 10 मिनट 15 मिनट इसको प्रैक्टिस करना है.
So this is what you can easily put and implement on yourself and others also. अगर आप सीख गए, आप अपने आसपास के सारे लोगों को ये सिखा सकते हो. Your parents, your teachers, also your friends, the people who are suffering right in front of your eyes and you're not able to do anything about it. आपको लगता है ये बेचारा कितनी तकलीफ में है यार, I can't do anything about it. मैं इसको कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं? Yes, Drumit, I think all teachers can use yes, yes, definitely. All the teachers can use it with their children, with their students, and even in your personal life, everybody can use it in a very good way. आपका बच्चा भी है छोटा और उसको बार-बार बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको बोलो कि बेटा चलो करते हैं, एक मैजिक गेम खेलते हैं, उसको बिठाओ, पकड़ाओ उसकी उँगली और बोलो चलो याद करते हैं, चलो, चलो 4 बार, 5 बार आप करोगे, तीसरी बार, चौथी बार वो खुद आपको बोलेगा आके कि चलो हाँ, आई वांट टू डू एंकरिंग, मुझे एंकरिंग करनी है, चलो बैठ के करो ना मेरे साथ। और फिर वो धीरे-धीरे अभी से इस उम्र में अगर उसने शुरू किया छोटी एज में, वो जब तक बाय द टाइम ही इज़ रेडी टू फेस द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, he would be equipped. So if you have more than one challenging mudra, same mudra, or for each instant happy moment to have a different mudra associated. Sarika, your question is very valid, and I'm okay to take the questions now because we have already learned the tool. So I will suggest सारिका कि आप एक ही मुद्रा एक ही मेमोरी से अटैच रखो. अगर सीखना है तो एक मुद्रा इज इक्वल टू एक मेमोरी. हर बार अलग अलग मुद्रा अलग अलग मेमोरी मत करो. लर्निंग के लिए आपको एक मुद्रा एक मेमोरी ही लगेगी. Right? So first train your mind to this one particular memory and then probably you can एक बार उसमें मास्टरी कर ली तो फिर आप किसी और मेमोरी को भी लेके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. बट स्टार्ट टुडे, आज स्टार्ट करोगे तो इसको मास्टर करते करते हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता निकल जाएगा. तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. और ये फ्री का ज्ञान आपको कौन देने वाला है? वैसे भी जहां से मिला है ले लो और उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो. बिकॉज हम तो वैसे भी इसीलिए यहाँ पर हैं दैट जितना हो सके जो चीज हम पेड क्लाइंट्स को सिखाते हैं वही आप यहाँ पे लीड के प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हो, अपने आप जान रहे हो. इससे बड़ा आपको प्रॉफिट नहीं है. और वैसे भी कितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा. सो मेनी पीपल हैव रजिस्टर्ड एंड येट अटेंडेंस माइट बी नॉट 100%, बट यू आर हियर, द लकी वंस आर हियर. जो लोग इतने यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं कि आपको ये ब्रह्मांड खुद यहाँ खींच कर लाया है. द यूनिवर्स हैज गॉट यू हियर. तो ये इसका कोई ना कोई मतलब रहा होगा, सम मीनिंग. कुछ यहाँ से आपको सीख के लेकर जाना है. और आज जो आप लेकर जा रहे हो, जो लेकर यहाँ से निकले हो, वो यही है कि कैसे खुद को हर ट्रॉमा से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में खुश करना है. Yes, Medha, you have to take the same memory every time. Unless and until you are not mastering it, you have to take the same memory every time. What if this particular is no longer happy in the future? Then this mudra will hurt us. Anubha, actually, I'm not able to understand what you're saying. Anubha, आपका question मुझे समझ में नहीं आया. Thank you, Lina. I know you always tell me this. So पता नहीं how many times you have heard this from me, but still you always want to listen to that again and again. Up to I think even you have mastered this. You should have. This is what I'm expecting. And about the others, जिनको लग रहा है कि इसमें आपको दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई पुरानी मेमोरी, व्हाट इफ पर्टिकुलर मेमोरी से ब्रेकअप. बट अनुभा डियर, आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर ये ब्रेकअप की मेमोरी है तो आप इसको याद ही क्यों करोगे? आपको तो याद करनी है पॉजिटिव अमेजिंग मेमोरी. अच्छा, मतलब अगर आप ये बोलना चाहते हो कि फिलहाल सब ठीक है और आगे जाके वही ब्रेकअप हो गया तो फिर क्या? तो भाई ऐसी मेमोरी लेनी ही क्यों है जिसमें श्योरिटी नहीं है आपकी? आप अगर श्योर नहीं हो आपके रिलेशनशिप को लेके तो फिर उस मेमोरी को इम्पोर्टेंट बनाओ ही मत अभी से. उस मेमोरी को इतना इंपॉर्टेंस दो ही मत अभी से. अब उस मेमोरी को इंपॉर्टेंस दो जिसको आप पूरी जिंदगी इंपॉर्टेंस दे पाओगे, ना कि टेम्परेरी वाली मेमोरी जिसमें आपकी श्योरिटी भी नहीं है. You might be having amazing moments with your other friends also, with your parents, or either with somebody, if not your boyfriend or girlfriend, somebody who is just a good friend. उसके साथ भी कोई अच्छी, आप चले गए किसी अच्छी वेकेशन पे, वो भी एक अच्छी मेमोरी होगी आपके लिए, उसको यूज कर लो. Right, Anubha? I hope I'm able to make you understand the thought process behind this. So do not think that everything is attached only to one relationship. Just give importance to a relationship which is going to be there for you till the end of time. उसी relationship के ऊपर जिसके ऊपर 100% आपको faith है, जैसे आपके parents होते हैं. If
नॉट इवन समबडी जिसके ऊपर आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, उसका मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आई टोटली बिलीव, है मेरी थॉट प्रोसेस है, मेरी बिलीफ है कि मैं किसी के ऊपर एडवाइस नहीं करूंगी कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए. नेवर एवर डिपेंड इमोशनली ऑन एनीबडी. यू कैन डिपेंड मे बी फाइनेंशियली एक बार कर लो तो चलेगा भी, बट इमोशनली नेवर एवर. ट्राई टू मेक योर सेल्फ सो इक्विप्ड कि किसी के कंधे के बिना आपका काम ही ना चले, ऐसा तो ये गलत है, और इसी से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. खुद को हील कर पाओ, खुद के ऊपर डिपेंड रह पाओ, इससे बड़ी कोई पावर नहीं है. So stop, getting into the zone where people are your source of happiness. Do not make people your source of happiness. Always make yourself your source of happiness. And otherwise, attach yourself to your superpower. You are always happy. किसी की help की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं. I can relate to this mental screensaver concept from personal mastery program by Professor Shikumar Rao. Yes, but this will be easy to implement as a physical mudra associated. Yes, Shikumar Rao is a very renowned person in the field of personal growth, self development. But the easiest language possible was conveyed by me to you. इसका ज्यादा टेक्निकलिटी में मैं नहीं गई हूँ, ताकि ये सबको समझ जाए, सबको इजी हो जाए इम्प्लीमेंट करना. So if there is anything Ma'am, else that you want to connect me with, it was simple. Yeah, Sarika. Somebody was saying something. Shivani, is that you? yes, ma'am. Yeah. So there is one more question we have from Janvi Chaudhary. Okay, Janvi is asking, ma'am, like REBT works on irrational beliefs, does right. NLP also work on a certain cognitive process? If so, which one? NLP is basically an overall developmental. I wouldn't name any particular program or any particular modality, but yes, it works in the overall enhancement of all the problems that you have. Any random आप ये ले लो, किसी भी random चीज को ले लो, जेस्टॉल थेरेपी को ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एनएलपी विल वर्क ऑलवेज एज, बोलते हैं ना, टॉर्च बेरर, काइंड ऑफ अ फ्लैग बेरर. उसको कहीं पे भी आप किसी भी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हो. इसमें इतनी सारी पॉइंट्स है, इतनी सारी मोडालिटीज हैं, किसी एक को पकड़ के भी क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है इस पे आप एनएलपी का कौन सा थ्योरी इसके साथ यूज करोगे. हर थ्योरी हर क्लाइंट पे नहीं जाती, हर थ्योरी हर प्रॉब्लम्स के साथ नहीं जाती. But yes, NLP is equipped with all the theories which can be dealt with all the problems. तो उनके पास NLP की फील्ड के पास बहुत सारी थियोरीज है, बहुत सारी मोडालिटीज हैं. एक नहीं तो दूसरी उस प्रॉब्लम में फिट बैठ ही जाती है, उससे रिजल्ट्स मिलता ही है. सो if you want to go about it, you can definitely research more on NLP. And if I can help you, definitely you can reach out to me as well. Shivani, can you do one thing? Can you please share my number and my details in the chat box, because I really don't want to type right now. In case मैं technically कुछ यहाँ पे गड़बड़ ना हो जाए, so I'm not typing anything right now. All right. So I hope I'm able to satisfy with the answers. Yeah, and it was really amazing. So, and that exercise was, I think, it is very helpful to all the parents. Like the main motto and the objective of this Mentopine is to help all the teachers, parents, educators, or those who all are connected with the adolescents or children or students in any ways. So, I think this exercise Right. helps a lot, right? So I think it is always advisable, because right now, because of this pandemic, nobody we are used to stay in home, and we get frustrated many times, and mostly the children who always used to play outside, meet friends. So I think we do exercise as a parents in our home as a like a game, you said, and yeah, with our online sessions if we are a teachers and educators. But I think it is really amazing. And still, if we have a 5 minutes, if you have any question, you can write down in a chat box or in a question box. We'll definitely love to answer that. But my feedback, because I have enjoyed a lot, and I was back to that memory, and I have a lot of number of people. I can reclaim that, okay, these are the things was going on, and I'm feeling very happy and refreshed. So I think it was good. Thank you so much. I hope everybody has the same opinion. So everybody should have the same opinion, because majority of the clients के साथ हम लोग ने ये किया है, and then we have
been able to vouch for it. हम एकदम properly बोल सकते हैं कि नहीं, this is going to work for everyone, ये सबके लिए काम करेगा. तो ऐसा कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस है, इंसान को बहुत हेल्प लगेगी, 4 जन आएंगे मदद करेंगे तो सीख सकेंगे. नहीं, ये आप अपने आप कर सकते हो आराम से घर पे बैठ के पिक्चर देखते हुए, टीवी देखते हुए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को डिटैच करके सिट एंड डू इट. सो it will definitely help everyone, I'm sure. And Lead, I'm so thankful to you as well that you are doing such a wonderful job by giving this platform to people to connect with themselves also. ये आप उनको हमसे ही नहीं connect कर रहे हो, ये आप उनको अपने आप से भी connect करवा रहे हो. You are making them aware that what they need in life, which is not easy, which is not everybody's cup of tea. बहुत कम लोग हैं जो इतना volunteer करते हैं, इतना इस चीज का importance समझते हैं. And I'm happy that you people are doing such a great job. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. I would personally like to ask you one question. Does this technique also help with the patients for epilepsy? Yes, we have seen patients not just with epilepsy, we have seen patients having chronic diseases like terminal diseases जिसको बोलते हैं. Like one I told is cancer of all the kinds. And then there are other diseases also which have doctors ने जहाँ पे बोल दिया है that this case is not going to work at all. It has to be a shut case. उसमें भी the techniques and tools which NLP has used has helped a lot. People have come with a lot of positive reviews and positivities through this. Me, especially as a healer and counselor, I always promote meditation for every problem. मेरे लिए अगर मेरा personal opinion आप पूछे तो मैं अपने clients को खाली meditation से heal करना सिखाती हूँ. And this is my forte. ये मेरा belief है, which is a strong one. So NLP में तो बहुत सारी modalities है, पर मैं जिसको promote करती हूँ वो meditation है. So अगर किसी को इसमें ज़्यादा deep में जाना है, I'm definitely there to guide everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was really very nice session. And to the audience, अगर आपको first time technique implement करने में थोड़ी भी problem हुई हो, you can see the recording again and you can like revise के एक टेक्निक में मैम ने क्या क्या बोला था. You can replay the recording, you can hear it again. जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, you will again receive a mail with the recording for you. So you can go to your mail, click on the link and access the replay that we have. We will also be uploading this video on YouTube shortly. So all of you can visit our YouTube channel as well to see the video. And ma'am, it was really helpful and I hope that all the people have really gained some help from this session. So thank you very much. Dhrumit sir, anything else you would like to add? uh, to be frank, as I said, that I enjoyed a lot, and thank you very much, because as we know that this is a free platform and it is meant to help all the parents, teachers, and educators, and students and youngsters, those who want. And we are very thankful to experts like you who always willing to spare their valuable time. We can understand that right now everything is going online and you people are so much busy, but you are still making some times for us, and free of course you are delivering such kind of session. So lead is always thankful to you guys. And even someone is not able to connect bhakti, so you can contact us and we will definitely share or forward you toward the bhakti. So don't worry about that part also. If you have any questions, if you have any troubles where lead can help you, or if you are willing to have certain kind of specific topics जिसके ऊपर आप आपको लगता है कि बात होनी चाहिए, experts की advice लेनी चाहिए, then as a teacher or as a parents, definitely you can share those points with us. We have already shared our WhatsApp group details, जहाँ पे आप आके you can share your points, जहाँ पे there is no other kind of extra irrelevant point post are there, so you will not get disturbed at all. तो आप वहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स की चीजें वहाँ पे होगी, and you can directly call us or you can share with us on that WhatsApp group. The next session with Miss Nirmala Raghu, she is from Dubai, and she is going to take the session on the given topic. So I will request all the teachers and parents to join us, and thanks a lot, Bhakti. It was a really amazing session and the exercise was really cool. So I enjoyed a lot. If you have any queries, anything you want to ask, you can call us, you can message us, or you can follow us on our Instagram, FB, and on YouTube. So thanks a lot, everybody, and thank you, Bhakti, again. Thank you so much. Thank you so much.
Thank you again, everyone. We will now be ending this session. You can contact us for any more questions or for any suggestions if you have for any topic that you want to listen to in the upcoming Mentopine sessions. Looking forward to see you all in the next Mentopine session that we have on 30th October. Till then, have a good time. Stay safe and stay home. Stay home. Bye bye, all.